तो केस हार्डनिंग या कार्बोनाइजिंग, दिस इज द मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील हैविंग टफ इनर कोर एंड हार्ड आउटर सरफेस। तो केस हार्डनिंग या कार्बोनाइजिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस मेथड से प्रोड्यूसिंग करते हैं स्टील जो कि क्या हो, इनर कोर में टफ हो और हार्ड हो आउटर सरफेस पर। कंपोनेंट जैसे कि गियर्स होते हैं, पिंस होते हैं, पिस्टन्स होते हैं और कैम शाफ्ट्स होते हैं, बहुत ही हार्डेंड होते हैं बाय दिस प्रोसेस। और केस हार्डनिंग स्टील जो होती है वो कैपेबल होती है फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक लोड्स एज वेल एज रेजिस्टिंग वियर एंड एब्रेशन। ये प्रोसेस होता है जिसमें कि इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ स्टील इन कांटेक्ट विद द कार्बन रिच सब्सटेंस। This process involves heating of steel in contact with a carbon-rich substance above critical temperatures for a prolonged duration. In due course, the duration may vary between hours to days, and the carbon penetrates into the steel to form a solid solution on the outer surface. Mild steels can be converted into a high carbon steel with addition of desired amount of carbon. On the basis of carbon-rich substance used, the case hardening process can be classified into following types. पहला solid और packed carbonizing, liquid carbonizing and gaseous carbonizing। केस हार्डनिंग हम लोग देखा, और केस हार्डनिंग में तो बेसिकली प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे तो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सॉलिड पैक कार्बोनाइजिंग, लिक्विड कार्बोनाइजिंग और गैसियस कार्बोनाइजिंग। जब हम लोग बात करते हैं पैक कार्बोनाइजिंग की, पैक कार्बोनाइजिंग को जब एक्सप्लोर किया जाता है तो पैक कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, कार्बोनेट्स हो गए ऑफ बेरियम, कैल्शियम और सोडियम का यूज होता है। और द स्टील ऑब्जेक्ट इज क्लीन एंड प्लेस्ड इन अ क्लोज चैम्बर amidst the surrounding of solid fumes. This chamber is heated to desired temperature for a long duration. Carbon gets soaked into the surface of the steel, and the depth of soaking depends on the time of exposure between steel and the solid fumes. Normally 0.1 mm penetration soaking takes place in an hour. This method suffers from the scale formation at the surface of the object. This is the पैक कार्बोनाइजिंग। पैक कार्बोनाइजिंग में देखा कि दिस प्रोसेस सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि कोक, कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक, कार्बोनेट्स ऑफ बेरियम, कैल्शियम और सोडियम इसका यूज करते हैं, और स्टील ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लीन और प्लेस करते हैं इन अ क्लोज चैम्बर amidst the surrounding of the solid fume. This chamber is heated to desired temperature for a long duration, or carbon gets soaked into the surface of steel. The depth of soaking depends on the time of the exposure between the steels and the solid fumes. Normally, 0.1 mm penetration soaking takes place in an hour, or this matches suffer from scale formation of the surface of an object. जब बात करते हैं लिक्विड कार्बोनाइजिंग की, तो इस केस में क्या होगा, लिक्विड कार्बोनाइजिंग केस में कि जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है रिच इन कार्बन इज यूज आइदर इन अ बाथ या बाय अ प्रेशर सिस्टम। in this liquid carbonizing in this case a liquid hydrocarbon rich in carbon is used either in a bath or by a pressure system. The heated steel impinged upon by a jets of liquid rushing out of nozzles. In due course of time, the carbon gets deposited on the steel, or steel is heated by a gas burns by electrical means. A case depth of 0.1 mm to 0.5 mm can be suitably obtained by this method. This method is better and faster than pack carbonizing, और scaling of this object is also not a problem. इस वाले में हमने देखा था कि तो मेथड सफर फ्रॉम स्केल फॉर्मेशन एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, स्केलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो नॉट परफॉर्म, नॉट अ प्रॉब्लम। जब बात करते हैं गैस कार्बोनाइजिंग की, जब गैस कार्बोनाइजिंग की बात करते हैं तो in this process the component is heated in a furnace whose surrounding is filled with carbon rich gas such as a methane, propane, etc. और जो हाइड्रोकार्बन इन कार्बोनाइजिंग गैस डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर
and the carbon get deposited on the steel surface. The thickness hardened case depends on the rate of gas flow. Small components such as balls and roller bearing, pins and axles can be used by case hardened suitably. तो case hardening में हम लोग देखा